कुछ और डिमांड कर रही है, हम कुछ और प्रेजेंट कर रहे हैं, मिसमैच वाला जॉब्स अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, मगर हम उसको टैप नहीं कर सक रहे, तो बड़ा गैप बढ़ते जा रहा है एंड समबडी एल्स इज टैपिंग इट. हैदराबाद में ऑलमोस्ट 65 nations की nationalities आके काम करते हैं ऑलमोस्ट. People from 65 countries work in Hyderabad, full time, part time, online, offline. हमें वो मालूम नहीं है, मतलब अपॉर्चुनिटीज टैप नहीं करेंगे, हमारे पास टैलेंट है, स्किल्स हैं, मगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और टैलेंट को थोड़ा इम्प्रूव करना है. तो द आइडिया ऑफ कैरियर क्लैरिटी लैब इज टू ब्रिंग सम क्लैरिटी ओवर कैरियर. आपको सब कुछ मालूम है, आपको जितना भी यहाँ पे देखेंगे आप, इट्स नॉट न्यू टू यू, इट्स रिफ्रेशिंग, ऑलवेज वर्कशॉप्स में रिफ्रेशिंग. तो क्योंकि हम बेसिकली वी हैव अ ब्रेन दैट इज अ कंटेनर ऑफ स्टोरेज में. स्टोरेज में जब आप इंफॉर्मेशन सामने नया आता है तो पीछे का इंफॉर्मेशन पीछे जाता है. दैट्स व्हाई वी लूज इंफॉर्मेशन. उसको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमेशा सामने रखना है, तो उसको रिफ्रेश करते रहना. जैसे आप F5 दबा के कीबोर्ड पे रिफ्रेश करने के लिए स्क्रीन गूगल क्रोम पे, व्हाई डू वी डू दैट? टू ब्रिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. आपकी मेमोरी को भी रिफ्रेश करना. दैट्स व्हाई जो मुल्क तरक्की करे, जो कौम तरक्की करे, उनके पास हमेशा वर्कशॉप्स, एजुकेशनल इवेंट्स ही प्राइमरी रहे. तो एक ही चीज रही जिनके पास, जिसकी तरफ से इंडिविजुअल हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, नेशन हो तरक्की, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं. ना हथियार से मिली, ना किसी और चीज से. जस्ट टू बिगिन, आज बेसिकली वी विल कवर दीज टॉपिक्स, नॉट ऑल ऑफ देम बिकॉज अपन ऑलरेडी आधा घंटा हो गया, तो अपने पास 3.5 घंटे है. सो विल कवर 4 topics as I discussed in the brochure. Why career matters, self discovery पर बात करेंगे. We'll talk about subjects to streams, to industry, to specialization. We'll talk about career paths and also we will talk about personalized 90-day action plan. ये 5 चीजों पर बात करेंगे for the next 3.5 hours. अगर मैं फास्ट हूँ तो मैं इसको बंद कर दूँगा और इसके हाथ में ये दोनों बंद कर. हाँ सो मेरी वॉइस थोड़ा क्लियर, हमें फास्ट प्लीज स्टॉप. आप किस मोड पे स्टॉप करिए. फॉर एनी क्वेश्चन डोंट कीप द डाउट विद यू. और मैं दर्द नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. आई कैन सपोर्ट योर दैट. व्हेन वी गो टू एनी वर्कशॉप, कभी किसी भी जगह जाते हैं, खासतौर से जब एजुकेशनल इवेंट्स में जाते हैं, we forgot to take one most important thing with us. The most important thing. What is that? They will look back. And जब जट्टों से मेरे को अंदाजा था उस बात का, इन्हें मेरे को अंदाजा था इस बात का, इन्हें वो बैक नहीं देते. नहीं, the crowd should bring it. अपन कभी प्रोवाइड नहीं करना. The crowd should bring it. अगर जट्टों से हम मंगा लेके एक्सपेक्ट करा था, तो इसको बजट में रख दीजिए. Anybody needs it, क्योंकि मैंने आपको पेन की अहमियत बता दूँ. मैं वो 55 years की बात पता चला कि what is pen. Believe me, 54 years की बात पता चला कि what is really a pen, what is ink. मतलब क्या चीज़ है, वो मेरी खुशी है आपसे शेयर करने. So we will start with why career matters. Can anybody define what is career? Can anybody define what is career? कोई भी जवाब आप. Career से अपन की अंडरस्टैंडिंग क्या है? What do you mean by career? एक नाम चल रहा है, हवा चल रही है. कैरियर बनाओ बच्चों, कैरियर बनाओ, अपने कैरियर पे ध्यान दो. तो उसका एक ब्रॉड डेफिनेशन क्या है? What do we know about it? जाते वक्त मैं वापस कर देके जाइए टेबल पे, आगे वो जिनके पास है. So what do we understand by career? Any answer बच्चों? Be frank, be open, be loud, be clear. पूरी झिझक निकाल दी जाए.
Career is good. So what I'm trying to say is clarity begins with the right questions, and the right questions shape your right decisions. Shape the right decisions. अगर आपके पास क्लैरिटी रहेगी, क्लैरिटी यानी यहाँ से हैदराबाद से बैंगलोर को जा रहे हैं, अगर आपको मालूम है कि मौसम साफ है, तो फिर आप अपने बैकअप रिसोर्सेज नहीं करते, सीधा निकल जाते। अगर क्लैरिटी नहीं रहे तो क्या करते हैं आप? अपने डिसीजंस लेने में ध्यान देते, यू टेक केयर ऑफ जर्नी। सो उसी लिहाज से कैरियर पे यू नीड टू टेक राइट क्वेश्चंस एंड द राइट डिसीजंस। कैरियर इसलिए मैटर करता है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू यू वांट, उसका इम्पैक्ट जो लोग कैरियर पे ध्यान नहीं देते, उसका इम्पैक्ट लाइफ पे फिर नहीं रहता, इसीलिए लाइफ आउटपुट नहीं देती। We complain on life, we complain with life. Everybody has complaints. It's natural. It's good to have complaints. जब तक कि आपके पास शिकायत नहीं रही, फिर वो शिकायत दूर करने का मौका नहीं। It's good to have complaints. It's good to have doubts. It's good to be upset. It's good to be upset. It's natural to everybody. तो उस लिहाज से मैं आपको बात कर रहा हूँ कि what kind of life do you want? अगर career oriented mindset है, तो ये question का आंसर आसानी से everybody will have a different answer. No two persons will have similar answer. Where to be on that? What kind of life do you not want? किस किस्म की जिंदगी आप नहीं चाहते? मैं हो, मेरे बच्चों के लिए हो, मेरे दोस्त के लिए हो, महल्ले के लिए हो, कौम के लिए हो, उम्मत के लिए हो, मुल्क के लिए हो. You know where the nation is going on. अगर हम इंडियन बात करेंगे, इंडियन सिटीजन, तो मुल्क हमारा है. जिम्मेदारी है, we are accountable for that. We will be questioned for that the day of judgment. Believe me or not. कुरान बता के हिसाब से होगा कि मुझे से वफादारी जो नहीं करा, फिर मैं जिम्मेदार हूँ. This is the question. We have to take that ownership. What are your priorities in your life? Why study, educate, study, work, and this sort of thing. ये पढ़ो, लिखो, एग्जाम में डिग्री लो, क्यों टेंशन? इसके बगैर क्या ऑप्शन है आपके पास? Do we have options without this? इसका फायदा क्या? टेंशन है ना भाई, प्रेशर का काम. 22 to 25 years I am putting my life, energy, मेरे parents, मेहनत, जज्बात. Can we solve the life's problem without this? That's the question. तो जो career oriented mindset है from the improved world, ताकि आप हम भी थे जवान, हम नहीं थे कर हमारे तो उनके पास एक माइंडसेट था. कैरियर इज समथिंग वेरी स्ट्रैटेजिक. जो कैरियर ओरिएंटेड आगे रहता, हमने अपनी 70 साल 80 साल 90 साल की जिंदगी के बारे में पूरा सोच के काम करना. दैट इज द प्राइमरी फाउंडेशन ऑफ कैरियर थिंकिंग. जितनी भी आप जिंदगी नेचुरली गुजारेंगे, अपने को नहीं मालूम क्या नंबर है अपना, तो अपना नंबर लगता, लेकिन जो कैरियर ओरिएंटेड बनता रहता, he thinks on a long term strategic way. कि मैं कब क्या करूंगा, ये करे तो फायदा है. There is a formula, but if not else then. एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला है. अगर ये करा तो ये होगा, ये नहीं करा तो ये होगा, ये करा ये हुआ तो ये हुआ. So all these flow charting they do it personally. That's how people become successful. So the definition is your career is not just about earning money. तुम क्या समझते हो? जॉब करो बेटा, पैसा कमाओ, कैरियर बनो. That is the first part of failure. जब आप उसको अपनी तालीम को पैसे से जुड़ा देंगे, that is an indication of a failure incident going to happen in your life. Indication, symptom है. बुखार आने से पहले आपको एक आदत शिकती होगी, बॉडी पेन होगी, right? जब आप बच्चों को अपने पैसों से जुड़ा देंगे, पढ़ो इसलिए कि पैसे कमाना है, तो वो सिम्टम है कि उसने कैरियर में अपनी लाइफ फेल होने वाला है. 100% में बेसिकली you will go in decline. Or do you agree with me or not? That's a different case. You don't need to decide everything today, but you must start thinking in the right direction. So the career oriented रहता, आप इसको ऑफलाइन जाके अपनी पर्सनल टाइम में करें. इसको सीरत से कंपेयर करें. आप जो भी आपको आज बता रहा हूँ, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको कंपेयर करें. ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 23 years का कैरियर प्लान था. What was the daily planning status? All this mindset, the terminology is coming from that aspect. So I hope I'm clear. Your career is not just about earning money.
It is about how you live, how you grow, and what you become, and also what you contribute, what you leave behind. Do you leave property? Do you leave a farmhouse? Do you leave a marriage hall? Do you leave a masjid at the backside? Do you leave a library? Do you leave behind a university, college, institution, academy, some innovation, some technology, some product? कुछ ना कुछ हम छोड़ के जाएंगे ना, कुछ ना कुछ तो छोड़ के जाएंगे. कम से कम बैंक में 50,000 रुपए तो छोड़ के जाएंगे. So that's your legacy of your life. छोड़ के क्या जा? And what did we contribute to this world? हम एरिया में क्या impact रहा? एसी गार्ड्स में रहते हैं, शांतिनगर एसी गार्ड्स में रहते हैं. हमारा contribution क्या है? What is the value added of being? अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरा फायदा क्या है? और अगर मैं जाऊँगा तो फर्क क्या पड़ेगा? कुछ तो फर्क, कुछ तो बेसिकली इम्पैक्ट होगा. So these are some 10 definitions about career. Career defines the direction of your life. इसको समझने की कोशिश करिए आप. A career is not just about a job. It decides where you go, what you become, how you live. Without direction, life becomes confusion. As I told you, simple example. Doesn't matter bank. Without direction, आप Google मैप बंद कर दीजिए, साइन बोर्ड नहीं है, समझो आप क्या बैंक बैंगलोर निकल गया. आप वहाँ के पट्टी बन के कहीं ना कहीं आपको छोड़ के आप ऐसा बैंगलोर चल रहा. No direction on that. Will you be able to reach that destination? It will take a very long time for you to reach that. Very long time. And by the time you reach, your all patience, your all ambitions are gone. And then you start comparing. मैं example देता हूँ, छोटा सा. I always give this example. हमेशा हम शिकायत तरजीह देते हैं. और सबसे अच्छी शिकायत हमारे पास अल्लाह माफ करेगा कि अल्लाह मेरी किस्मत खराब. This is the common terminology that we use, especially Hyderabadi जो aspect है. That is the किस्मत खराब लेकिन उसको आप अपना ले. You create something. Why do you harm that thing? आप एक कुर्सी बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर है आप. You're a manufacturer of a chair factory. Do you crush आपकी कुर्सी को आग लगाते हैं? समझा हो ही नहीं सकता. जैसी कभी कसी होनी है जिंदगी की सबसे प्रैक्टिकल जो स्टेटमेंट है. The way you live, life will give you back the same. आप जिस हिसाब से अपनी यंग एज में, खासतौर से यंगस्टर जो है, जिस हिसाब से अपनी जिंदगी को आप देखेंगे ना, उसी हिसाब से आपको जिंदगी वापस मिलेगी. उसी हिसाब से जिंदगी वापस मिलेगी. So please look at life very positively. और everybody starts from zero. ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी लोग ऐसे नहीं है, छोटे से करना ट्राई करो. ये सब के सब लोग from the first man आदम अलैहिस्सलाम किराए के मकान में थे, आखिरी मान आदमी भी थे किराए के मकान में. Even if you have your own home, you will leave it behind. You will leave because this world doesn't belong to permanently. So उस पे ध्यान रखियो. आपके साथ जो रहने वाली चीज है वो कैरियर है. The thing that will stay with you is your career. I'm not trying to motivate. Please, इसको motivation talk बिल्कुल consider मत करिए. Zero. I believe in zero motivation. I believe in self motivation. मेरा जो यकीन है वो self driven रहना आदमी, self motivated है. मैं आपके पास I'm trying to bring a 1% change. Workshops का मेरा जो objective रहता है only 1% change in the thought process. Second thing is second definition of a career from a different process. Career determines your daily life. जो career oriented रहता है, strategic रहता है. 40 साल 50 साल की सीमा से प्लानिंग है. We always tell a community के बारे में बोलते हैं कि 50 साल की प्लानिंग है तुम्हारे पास. 50 साल की प्लानिंग. तो क्यों है? Because they are career oriented. They really are very practical. They are the most practical people on this planet today. Although they are doing it wrong way, लेकिन practicality है उनके पास. They are delivering it. जो बोले वो करके दे रहे हो. Right? We are not able to give it our 2 दिन का प्लान नहीं है मेरे पास. Productivity का प्लान नहीं है. Except for 3 टाइम खाना है. घर के लिए ले जाना है. दोस्तों से बैठना है. So all these entertainment kind of lifestyle है. So जो बंदे कैरियर ओरिएंटेड रहते हैं, जिस फैमिली के अंदर कैरियर का कॉन्सेप्ट रहता है, वो फैमिली को आप डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते. Those families will not bother you. They are not in touch with the world. वो लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ है और अपनी तरक्की में मसरूफ है. So your career decides what you do every day, how you spend your time, your lifestyle. You will spend 2/3 of your life doing this daily. This is a very critical analysis. I did it personally.
अगर अपन एक लाइफ की स्पैन को देखा ना एवरेज 70 और 75 इयर्स मैक्सिमम निकालती थी, ठीक है, उसमें से आखिरी के 5 साल आप छोड़ दो, 5 से 8 साल छोड़ दीजिए, तो कमजोरी बीमारी पुराना मसला कर रहे हैं, शुरू के 20 साल छोड़ दीजिए, पढ़ाई बचपना लग्जरी कंफर्ट शेल्टर ऑफ पेरेंट्स एंड ऑल दिस, सो लिव दिस 1/3 ऑफ योर लाइफ, बाकी का बचा 2/3, जो 2/3 स्पैन है, this is completely your career. This is completely, no 1% of it cannot, you cannot object me on that. If इसका भी 2 दिन भी निकाल लो उसमें कैरियर भी नहीं. So 2/3 of our life, on average, if we live 75 years, we spend on career. अपन अपने कैरियर से रिलेटेड में वक्त लगा दो. चाहे आप हाउसवाइफ रहो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल रहो, चाहे whatever it is. अगर आप किसी ना किसी मशगूलियत में रहते, मशगूलियत इज पार्ट ऑफ योर कैरियर, जिससे आप अल्टीमेटली यू अर्न एंड देन यू सर्वाइव. एक वेल्डर को देखो, एक मैकेनिक को देखो, एक पिक्चर वाले को देखो, एक प्राइम मिनिस्टर को देखो, उसके कैरियर है, उसकी ग्रोथ प्रोफाइल है. अगर फर्ज करिए 75 इयर्स के बाद एक सीवी बनाना है, व्हाट विल आई राइट इन माय रिज्यूम? दैट्स द पॉइंट. सो माय रिज्यूम इज द फेस ऑफ माय लाइफ. ये जिंदगी ये गुजारा, that's what it is. तो आप सोचिए कि आपको अपनी 75 इयर्स के बाद मेरे रिज्यूमे में क्या लिखना है? That's what strategic thinking is. Very far. इसलिए अल्लाह जो है जन्नत की जो है आपको हमेशा तरफ very strategic approach है मुसलमानों की, very strategic. आप ना बताना infinite time के बारे में सोच रहे हो अल्लाह का, infinite time. You don't know when will we go in one fine day. लेकिन आपको वहां तक सोच लेकर जाना, दैट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग व्हाट द कुरान टीचेस अस. लेकिन वी आर फार बिहाइंड, वेरी फार बिहाइंड. थर्ड पॉइंट इज कैरियर इंपैक्ट्स योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. आप बहुत काम की चीज है, फाइनेंस वी आर इंटरेस्टेड ऑलवेज, पैसा पैसा पैसा, एवरीबॉडी वांट्स पैसा, राइट? किसी को पैसा नहीं चाहिए आपने, प्लीज पैसा चाहिए आप. एनी ह्यूमन बीइंग, except human being, nobody values money. You search the entire 15 trillion light years away तक चले जाइए, nobody is interested in it. Nobody. Even if you find aliens, what NASA is saying, aliens could do you, let them give us money, people value, except us, because wealth is directly associated with us. आपके पास पैसा नहीं है, finish. आप मुसलमान हैं, it doesn't matter. आप सबसे पहले डिमोटिवेटेड हो. मनी इज योर टूल दैट ड्राइव्स यू फॉरवर्ड. मनी जब आपके पास जेब में 5 लाख रुपए रहने, तो एक दिन दूसरे दिन 500 रुपए रहने. 5 लाख दिन जिस दिन रहेगी आपकी सोच अलग रहेगी, जिस दिन 500 रुपए रहेगी आपकी सोच अलग रहेगी. सो मनी इज अ टूल and we are obligated to earn it legally. That's the obligation on us. That's something different of. So you should be money thinking, financial planning on us. We are very, very, very far behind. I learned it very late. That's what I mean to define. जिसके पास फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होने, पैसा कमा ही नहीं सकता. आपके पास पैसा अगर कमा भी लेता, आप जमा नहीं कर सकते. अगर जमा भी कर लेता, खर्च करना नहीं मानो, तो फायदा कभी नहीं आपको पैसा. So financial planning, how to earn, how to return, how to invest, you should all learn all these aspects. Your career affects your income, your financial independence, your quality of life. Your wrong choice is your financial struggle. आप 30 years के अंदर अगर financial planning की रोड मैप नहीं डाले, then you will not come. You will not be able to come, especially in this fast world. दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है, change बहुत quick आ रहा है. So you will not be able to do that. So teach your kids to how to earn money and how to save. That's very important. Career influences your confidence and identity. When asked or questioned about you, what do? Your answer becomes part of your identity. सबसे पहला सवाल हम क्या करते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, आपकी क्या छोड़ दी. What is that related to? It is related to your work, your job, ultimately your career. सीरत का अगर मफहूम देखें तो it's about career. सीरत का अगर मफहूम देखें, it's about 23 years of my leaders. How he lived, what he did, what he delivered.
Why do we study still? Because we want to see what he delivered to us. Why the answer was after assumed. Coming to the next point. Career affects your mental and emotional health. Yes, if you choose wrongly, stress, pressure, regret, wrong decisions, take you to the wrong place. Right? And right decisions, satisfaction, peace, motivation, pushing you want to celebrate. So always focus on this aspect. Career shapes your growth and learning. Career oriented बंदा क्या है? They never stop learning. अपन क्या समझते हैं? डिग्री कर लिया हो गया काम खत्म. मैं तो ये सीखा. डिग्री मिलेगा तो खत्म. You are the king of the world. आपको कोई टेंशन की बात नहीं. 2 साल के बाद मालूम पड़ा कि नहीं जॉब्स के ये होगा होगा. You stop learning. Simply you're out of the market. आपको सीधा मार्केट में हो गए. Boss, please don't come from tomorrow. You're fired. Today it is happening. Google has Oracle has fired 16,000 employees last month. Why? Because continuous learning appetite नहीं है. They observe analytically, psychologically observe करें कि ये बंदे कुछ पढ़े ही नहीं. हालांकि talented skill है, उनके जाने से फर्क पड़ता है, लेकिन still they fired them. Why? Because वो learning appetite नहीं है उनके पास. They don't like reading books. They don't like learning. Go out. This is learning organization. Skills you develop, knowledge you gain, growth opportunities. This is all that shapes your learning. Career determines your opportunities, your career opens or closes opportunities, exposures, global chances. Career impacts your family and future. Your decisions don't affect about you, your family, your future lifestyle, your responsibilities. Yes, if you are a good person, you can keep your family well. If you are a bad learning person, you can have to struggle. जब स्ट्रगल करते हैं तो पैनिक रहता है, स्ट्रेस आता है. स्ट्रेस आपका अल्टीमेटली आपके फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर इम्पैक्ट होगा. वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो गए. बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेल्थ, एंड वेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वर्क. स्ट्रेटेजिक वर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्रॉडर वे कैरियर थॉट प्रोसेस. राइट? Am I clear? Am I clear with my words? Next thing is career determines your contribution to society. Very important. अब हम क्या कर रहे हैं? अपन basically पढ़ लिया लिख लिया, so we think we are done with it. It's not. What you contribute matters. आपको अगर respect expect करना है, तो आपको deliver करना पड़ेगा. अगर you are expecting respect out of the society, then you have to deliver something. Not with an intensity of इज्जत चाहिए तो मैं काम. That's wrong. लेकिन आपको सोसाइटी का नेचुरल लॉ है. वर्ल्ड का ह्यूमन बीइंग एक नेचुरल लॉ. यू डिलीवर, यू रिसीव. पहले आप सलाम करो, फिर आपको जवाब मिलेगा. आपको सामने से वालेकुम सलाम मिलेगा, उनका सलाम नहीं करना है. So first we have to deliver. First we have to invest the first 20 to 25 years. Then आपको लाइफ पर ढालेगी. ऐसा नहीं होगा कि 70 years का पैदा हुआ और फिर होते होते dying for 0 years. First initial period is of investment. 1/3 of your life is of investment, and 2/3 of your life is your return on investment. If I do not invest, आप बैंक में पैसा नहीं डालेंगे या किसी कंपनी में स्टॉक में मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, how will you get returns? आप ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन को 8 घंटे नहीं लगा रहे हैं, 4 घंटे लगा दो, आपको 4 घंटे के पैसे मिलेंगे. The way you invest, the more you invest, the same you get multiplied, added, whatever it is. Today money is multiplying, by the way. We'll see that. And then last, career shapes your legacy. This is the most important. This is what I like. That's why I choose the topic career. So career actually आपकी legacy है, आपकी एक चार्जशीट है. As I told you, 75 years के बाद अगर बात let's see our resume. You see in your isolation, family को बता दें, भाई बहन को बताएं, आप खुद लिखिए अपने बारे में. So you will realize that where did I lose, where did I pass, and how people succeeded in spite of having all those similar struggles what I have. Same मुसीबतें हैं, लेकिन उसके पास एक अलग impact है लाइफ का, अपने पास अलग impact. It's personal, professional, social, network, everything is good. Although he had almost same problems as I have,
लेकिन ही पास थ्रू इट, कैसे निकला वो टैलेंट है, वो आपको सिर्फ आप कोई किताब नहीं सिखा सकती, कोई फरिश्ता आगे नहीं सिखा सकता। यू हैव टू इनोवेट योर ओन वे, यू हैव टू फाइंड योर ओन वे, देयर इज नो ऑप्शन बी फॉर दैट। आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, बिलीव मी और नॉट, कोई मदद कर। यू हैव टू सिट डाउन योरसेल्फ, थिंक अबाउट इट, टेक a paper and pen, start writing your problems. Then that's the most helpful point of solving any problem. You should write your problem to solve it out. Now, अब अपन move on to next topic पे. So before that, I just surveyed 3 days back about this. अगर ये पूरी गोल्ड इकोनॉमी को देखेंगे आप, इसमें फॉर्मल मार्केट है, इनफॉर्मल मार्केट। फॉर्मल मार्केट से कनेक्टेड है योर एजुकेशन, your skills, mainstream market, organizations, companies, factories, manufacturing, trade, business, industry, entrepreneurship, startups, all these are formal market. जिससे main उनका ingredient क्या है? Education, skills. तो जो तालीम याफ्ता पढ़ेंगे, तो then you will have thought to projector की factory करो, business अच्छा है। How will you innovate projector? By education. Formal market. Informal market is all about labor, non-educated. In spite of education, unskilled. In spite of skill, they have less power to show it off. Talent market में जाके फेस करना एक basically मुकाबला है आपका लाइफ के साथ. It's always an interaction with life realities. आप आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, next 1 week back, 1 week forward, you have new problem to solve. So there is no end of problems. You assume कि यार problem solve कर दिया, this is the end of it, पढ़ाई हो गई, शादी हो गई. No, it's not that. It's a lifelong process. So formal market is governed by state laws. ये अलग बात है कि state laws पर आप कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे कि laws की आज पता नहीं है. That's a different topic. लेकिन there is something called law. If you go by the law, nothing will disturb you. If you break the law, everything will disturb you. So the formal market is governed by state laws, requires official registration, licenses, adherence to labor, product safety, and taxing regulations. And the informal market, जो 58% है, unregistered and loosely regulated by local authorities, transactions rely on bargaining, mutual trust, and personal networks rather than legal contracts. Cash business. This is banking business. This is pure legal. This is visible. आप टैक्स भरने की बुनियाद आपकी इनकम के ऊपर बुनियाद के ऊपर टैक्स भरना. बोलने का मतलब इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको फॉर्मल मार्केट में ग्रोथ के rather than being in informal market. If you are not educated, definitely we will fall into the informal market. And see, the percentage of the population is larger in informal market. This is the catch point. Why 58% fall into the informal market? Because they do not have education. Most of them comes from Africa and Southeast Asia. इसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये पूरा कॉन्टिनेंट, and then African continent. इनके पास value of education नहीं है. And value of education पहले थी अलग बात है, लेकिन value of education Europe and United States, Russia, Japan, they recognize the value of education. They invested on their population. They invested, every person invested on their families. We least bothered about it. So investing is. That's why we come into the informal market. We have more than engineers, we have Zomato drivers. From the Muslim community, let us be very frank. We have delivery boys more than engineers and doctors. Why? Because informal market को पकड़ रखते हैं. Quick money, quick returns, quick easy job. Interview करने का सवाल ही नहीं होता Zomato. And anybody fail in interview in Zomato? Why? Because it's the most easiest job to do. लेकिन it's informal, उसमें तरक्की नहीं आपके पास. So make sure your kids are informed about this, that you have to fall into the formal market. That is the educated market. पढ़ाई के बगैर आप फॉर्मल मार्केट में नहीं आ सकते. So with that, I've just given you a glimpse of what career is, some clarity on career. I hope it was clear. So now coming to the most interesting topic, one of the most interesting topics. Everything is interesting, no doubt. Okay, I will start from this, the most bottom line statement. You can read this.
Personality before profession. If you go to any organization, मैं आलमगीर मस्जिद में एज ए एग्जीक्यूटिव जो है मैं जॉब अप्लाई करूँ, तो आलमगीर मस्जिद की जो कमेटी है सबसे पहले क्या मांगते हैं? अरे वो बोलेंगे रेज्यूम होना, the resume is my first face that shows who is the person. अगर वहां पे इंटरेस्ट आया, then they will call. अभी तो कोई बात नहीं. So what they are seeing me coming in is my personality. How I walked, how I talked, how I communicated, what I taught, how sensible I am. तो सारी मेरी नफ्सियाती पर्सनैलिटी के ऊपर पहले गौर किया जाएगा, उसके बाद फिर जॉब प्रोफाइल की बात होगी. दैट्स वो एचआर के जो राउंड्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3. राउंड 1 और राउंड 2 में जो फेल हो जाता है, राउंड 3 में नहीं पहुंचता. व्हाट इज राउंड 1 and राउंड 2 of those organizations? Can you answer that? What is round 1 and round 2 of that organization? It is all about your personality. It is entirely about your personality. आप एक प्रॉब्लम को सामने रखते थे टेबल पे, सॉल्व दिस, आप एकदम चेहरा बदलना पड़ेगा. तो जिंदगी में पहली बार करना, फिनिश योर आउट, you're out, simply out. If you behave coolly, then you will be at least considered to move forward. तो पर्सनालिटी बिफोर प्रोफेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं क्या करते हैं, डिग्री ले लो मैं जॉब मिल जाता, ये अपनी थॉट प्रोसेस है. वो दौर था पहले टाइपिस्ट आती थी, टाइपिंग आती थी, हमारे वाले साहब टाइपिंग आती थी. सऊदी अरब में मक्का में ऑफिस था, जॉब मिल जाता था 6,000 या 4,000 की जॉब देते टाइपिस्ट. सो दैट वाज दैट स्किल 50 इयर्स 60 इयर्स बैक. तो अभी दौर चले गया. नाउ इट इज वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव. आप एक टैलेंट बताइए, कैटेगरी he is able to do that same talent with a 10% less salary, he is hired. That's it. Competition at all levels. So अगर आपको मेन स्ट्रीम मार्केट में रहना है, फॉर्मल मार्केट में रहना है, तो आपको फिर कंफर्ट लेवल छोड़ना पड़ेगा. You have to struggle, you have to have that strong appetite of lifelong learning. Otherwise, फिर आप मेन स्ट्रीम मार्केट को भूल जाएंगे. आप फिर वही middle class and lower middle class informal market in 60%. And by the way, that informal market is increasing. Informal market is increasing. That's why unemployment क्यों बढ़ा? क्योंकि लोग पढ़ाई को पढ़ाई के हिसाब से लेते हैं. Education is not being considered as a value system for the human being. We are not giving attention to knowledge, we are giving attention to degrees and certificates. That's why career-oriented mindset. So mainstream market आपको सीधा neglect करते हैं. So self-discovery is your second topic. Who are you is very important, because personality before profession. Before choosing a career, you must first understand the person choosing it. So do we know who we are? If I just ask you a general question, आप कौन है तो मैं क्या बोलते हैं? नाम, मार्क्स, क्लास, एक्सपेक्टेशन. मैं यहाँ का, अरे मैं आप है कौन? Somebody asks me who are you? मैं सीधा mean नहीं बोलूँगा. लेकिन if I ask that question to myself, who are you? That is very good. That is a game changer. कोई भी अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ मैं? क्या करता हूँ मैं? मस्जिद, नमाज, रोजा, ज़कात, इंसान, so paying to it. What is the problem? So tension नहीं, might be tension comes. So this question should disturb you. ये questions अपने आप से पूछिए आप. Be it a female or a male, it doesn't matter. Every human being should understand this concept. Why are we here? Again, the same question. Why is education required? It's so challenging. Impression. Why do we एजुकेशन डिग्री पढ़े की मेहनत करो? बच्चे बहुत परेशान करते हैं, हम भी परेशान हैं. मगर वो समझाना, वो वैल्यू है, वो आपका एक्चुअली दोस्त है. व्हाट डू यू लाइक अबाउट योरसेल्फ? जब आप अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपने आप की पसंद नापसंद आपके पास निकल के आता है. If you do not talk to yourself, if you do not know yourself, then you don't discuss about that. Where have you come from and where are you heading towards? आप कहाँ से आए? यहाँ क्यों रह रहे हैं?
कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सो ये जर्नी को समझना जरूरी है. What is life? Life is a journey. And career plays a two-third part of your journey. Am I right? Am I right? Lastly, what's that unique thing that inspires you about your journey of life? ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको ड्राइव कर सके, उसकी तलाश करो. आपको जाने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, गाड़ी में पेट्रोल है. तो that thought process, that inspiring process is your motivation, is your engine that will drive you forward. एक जस्तुजू पैदा कर दिया. तो जस्तुजू नहीं है, अल्लाह बोले जस्तुजू नहीं है तो फिर आपके पास ख्वाब नहीं बना सकते. अल्लाह में अल्लाह अगर आप जस्तुजू नहीं है तो ख्वाब नहीं बना सकते. आपको ख्याल आते हैं, चले जाते हैं, 10 ख्याल आते हैं, 100 ख्याल. वो जस्तुजू, वो ऑब्जेक्टिव्स, दैट विजन, दैट थिंकिंग शुड बी देयर. So I'm trying to explain you the first question, who we are. So I try to do an analysis, like analysis kara. Me versus everything else. Me in the sense human beings. I'm ultimately मेरे को इंसान होता है, right? Ultimately we all fall into the category of human beings. Ultimately उसको उर्दू में इंसान बोलते हैं. Ultimately we all fall into the English word उसमें human beings. And that is practically 100% correct. So ठीक है, अगर मैं living being हूँ, there are billions and billions of living beings. Will make a difference. If I compare with a street dog to myself, what is the difference? I'll show you the difference. I'm comparing myself, me and my mother, to a street dog. जिंदगी कुत्ता है, फिर रात में दिन में पास करता है. कोई टेंशन नहीं होता. He doesn't have 1% tension in his life. Tension को अपनी झोली में. So there are creatures like us, living creatures on the ground, under the ground, above the ground in the air, under the waters. Everywhere humans are alive. Everywhere एक living creature होता है. कोई ना कोई जिंदा मखलूक मिल गया. कहीं भी चले जाओ. अकेले कमरे में बंद कर लो, 2 मिनट में उसमें कुछ ना कुछ आपको हवा दे. जमीन की तरह वैसे कीड़े मकोड़े. You have all these things living. So what is the difference? I am also living. He is also living. It is also living. What is the difference? All have basic needs. सबके main 3 चीजें हैं: food, shelter and safety. अरे किसी को चाहिए. Can we survive without this? Can we survive without food? Without shelter? Without safety? These are elementary needs of a living creature, not human beings. Elementary. Without this, उन्हें dead creature are. He's out. Then animals, birds, insects, and all creatures are species. They eat, they protect themselves, they reproduce. Human also does the same. यहाँ तक तो similarity है. जितने creatures बना, you talk about billions and billions and billions and billions of मखलूक. जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, हवा के ऊपर, हवा के नीचे, कायनात के अंदर, दुनिया के बाहर, चांद, सितारे, सैयारे, we don't know. 16 trillion light years away तक यूनिवर्स डिस्कवर हो चुकी है. Still, there is nothing similar to a human being. Nothing similar. I will relate immediately this. That's why Quran has stated, "Ashraful Makhluqat." You are the best of the creature. ये मुकाबले की मखलूक है ही नहीं. Research organizations like NASA are trying to find, and they have terminology of making aliens work. They are trying to make up stories. They couldn't get it because it is not defined. It is not there actually. That means I am the most intelligent out of all these. The most intelligent, right? But here comes the big difference. What is the difference? Only humans can think beyond survival. कभी जंगल का बादशाह जिसको मैं शेर बोलते हैं, कैन ही थिंक मैं मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? कैन ही जंगल we give him respect. We give him respect. जंगल का बादशाह बोलते हैं. So dignified जंगल का बादशाह किसको बोलते हैं? एक dignified respect मिली उसको इंसान की तरफ से. लेकिन मुझे कभी ये सवाल मेरे मम्मा के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? घर नहीं है, पैसा नहीं है. We have that ability to think beyond survival.
सर्वाइवल, थिंकिंग, चॉइस, प्लानिंग, फ्यूचर विजन, फ्रीडम, ये सारी चीजें अपने से एसोसिएटेड। ये चीजों को निकाल दीजिए आप। वी आर सोशल एनिमल, वी आर सोशल एनिमल। साइंस हैज डिक्लेयर्ड दैट। साइंस की किताब उठा के पढ़िए, 50 से 60 साल पहले रिसर्च। What Darwin used to say is, we are born from monkeys. That's how he came, right? So he's a fool. He said his forefathers are monkeys. Because he took out the elements of those intelligent things. He took out the freedom aspect from the human being. If I have no freedom, I'm social. Because freedom है, thinking है, survival की बात है. Wealth creation है, can the lion create wealth? Can the street dog create wealth? हाथी सबसे बड़ा giant creature है. Even we know angels, we know shayateen, they cannot create wealth. They cannot recreate. Enterprise नहीं बना सकते. Google जैसा organization फरिश्ता नहीं बना सकते. Algorithm, writing books, nobody can do that. So we have that power. Only humans can ask why. The most important thing. सवाल पूछना मत छोड़िए आप किसी भी से भी हो, शायद सामने वाले को अच्छा लगो, बुरा लगो, पंगा होगा, झगड़ा होगा, मगर अपने अंदाज से सवाल पूछना जरूरी है. If you are not asking that question, again we are social animal. Believe me or not. If you are not asking questions and if you are in comfort, दो बीमारियां इंसान के साथ. सवाल नहीं पूछना एक बीमारी है और अपने आराम तरबीयत पसंद करना एक बीमारी. ये दो बीमारी हमेशा आपके साथ लगे रहेंगे. ये दो बीमारियों को हमेशा रिकॉग्नाइज करते हो. If you do not recognize, if you do not train your children on these diseases, don't expect return on that from that child. So identify these things. Again, if these elements are not there with me, I am simply a social animal, right? Next, only we can choose a career. जंगल का बादशाह अपनी 40 years के resume नहीं बना सकता. Nobody has that element to write their CV. Nobody, except us. I'm coming to the point that I'm trying to take you. A bird will always build a nest, a fish will always swim, an animal will always behave the same. But we associate ourselves with work, profession, career, and can become what डाकू भी बन सकता हूँ, मैं वली भी बन सकता हूँ. दोनों एस्पेक्ट है आपके पास. दोनों एस्पेक्ट है. I can become the most spiritual human being. I can become also the worst human being the humanity has ever seen. I can become that. वो फ्रीडम है अपने पास. ये रास्ते में इसी में भटक गया. तो आपको किस रास्ते जाना है? बैंगलोर जाने के लिए बॉम्बे हाईवे पकड़ेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे? As simple as it is. तो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, कैरियर ओरिएंटेड जो बंदा रहता है, मैं ये पढ़ने के बाद क्या करूंगा वो सवाल है ना आपके पास. मैं ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन के एडमिशन के दूसरे दिन आपने सवाल आना कि ग्रेजुएशन के बाद मैं क्या करने वाला हूं. वो आपको डिस्टर्बेंस है ना. वो डिस्टर्बेंस है ना, फिर आप कंफर्टेबल अगेन डिजीज इज कंफर्टेबल आपको हमेशा खींच लेगा. कुरान आपको उसको कॉम्प्लीमेंट करती है कि आपका नफ्स है वो कंफर्टेबल में आपको खींच लेगा. नफ्स आपके रूह से दुश्मनी करती है. सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का एक मसला है. Career can become anything like it. So, teacher, journalist, author, artist, engineer, entrepreneur, leader, doctor, nurse, technician, lawyer, innovator, entrepreneur. You talk about any profession. आप एक स्कूल ड्राइवर फिटर हो गए, एटलीस्ट प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं. इनोवेटिव माइंड है. आपको इनोवेशन का अगर माइंडसेट बना तो आपको खुद ऑर्गेनाइजेशन उठा के बैठाता, एलिवेट करता, सिस्टम्स उठा के बैठाते हैं. अगर आप फर्ज करिए आप एक काम के बंदे हैं, पूरा मैसेज सिर्फ आप एक काम के बंदे हैं, पूरे नहीं छोड़ते फिर आप. क्योंकि आप काम किए हैं. आप, मेरे को मालूम है कि आपके जाने से नुकसान है, तो वो कला आपके पास होना चाहिए ना. दैट एस्पेक्ट यू शुड हैव. सो कैरियर थिंकिंग विल ओनली गिव यू दैट. प्रोफेशन का जो डेजिग्नेशन है, वो डेजिग्नेशन सिर्फ ह्यूमन बीइंग के साथ है. ओनली ह्यूमंस बिल्ड सिस्टम्स. वी हैव बिल्ड सिटीज, वी हैव बिल्ड टेक्नोलॉजीज, वी हैव बिल्ड एजुकेशनल सिस्टम्स, वी हैव बिल्ड इंडस्ट्रीज. आप सोचिए आरामको जैसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन कैसा बना है. आरामको जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एंड गैस ऑर्गेनाइजेशन कैसा बना. उसकी कभी आप रिफाइनरीज का यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री देखिए. जम्बो की रिफाइनरीज का 15-20 रिफाइनरीज कैसा बना है. Who can do that? And how did they do that? With education. EDUCATION. उर्दू का वर्ड आप आपको बोल रहा हूँ.
उसका तर्जुमा पढ़ाई नहीं है, उसका तर्जुमा इल्म है। ऐन लाम, अगर आपके पास ऐन या अलिफ इल्म से आप तरक्की कर सकते हैं। बगैर इल्म के मैं एक जानवर हूँ, फंडामेंटल, नो ऑप्शन बी फॉर दैट। अगर आप इल्म नहीं हासिल करने की आपके पास जस्तजू है, फिर अपने आप को इंसान समझना ही बेवकूफ है। यू टेक आउट फ्रॉम योर टैलेंट। So we humans don't just live in this world, we design the world around us. We are change makers. We are not here to rest and retire. Retirement is a corporate terminology. इंसान को जल्दी बुढ़ा गया 60 या 65 इयर्स में इंडियन गवर्नमेंट का लास्ट 65 इयर्स, उसके बाद किसी काम के नहीं आपको, मर गए तो अच्छा बनी सोसाइटी भाई, तो स्टिल आप अलग अनहेल्दी भाई, कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी हो, डोंट एक्सेप्ट दैट। यू आर नॉट हियर टू रिटायर, डेथ इज योर रिटायरमेंट, मौत आपका रिटायरमेंट है। बिकॉज एज फार एज यू आर इन दिस वर्ल्ड, अगर आप एक प्रोडक्टिविटी के एंगल में नहीं है, जब आप नेगेटिविटी के एंगल में चले जाते हैं, अपने आप को जब रिटायरमेंट समझ लेता हूं, आप कुछ भी नहीं रिटायर हो गया, बच्चे से पढ़ के जाते हैं, दिस इज व्हाट, पता मैं ऑलरेडी कंफर्ट लेवल में चले गए। तो मैं क्या बोला, कंफर्ट लेवल में आती है आपको सोशल एनिमल, तो सिर्फ मरने का ही इंतजार होगा रिटायर करने का। टेक इट फ्रैंकली, मैं थोड़ा, इट इज गुड बंधन पाल, इट इज गुड। Only we have values and ethics, very important. झूठ कुत्ता नहीं बोलता, झूठ चांद सितारा आसमान शेर मछली झूठी हाथी सूअर सांप, किसी को भी ले लो आप, किसी को भी ले लो, गाड़ी मोटर इंजन हवा झाड़ पड़ी, कोई भी झूठ, किसी के पास भी अखलाक की वो तारीफ में नहीं, इसको अपने, that's why Quran आपको respect दिया, that is why Quran is trying to say you are Ashraful। why? सवाल मेरे से ये था कि अशरफुल मखलूक अगर कुरान मेरे को बोली, how I can guess how? He is saying I have created you, you identify yourself, my responsibility is very vast, my responsibility is to create you, be conscious, अपना conscious, start thinking, start asking what, why, where, क्यों, so क्यों, then you will realize the inner power. Yes, I am indeed that. So we have values and ethics. We know what is right and wrong. We know what is good and bad. halal haram का किसी के साथ मसला नहीं है, किसी के साथ मसला। इंसानों में 90% मसला नहीं है, इंसान को दूसरी मखलूक को छोड़ दो। We are accountable for our actions and our impact. I give this example. हिरन अपने बच्चों के साथ, हिरन भी अपने बच्चों के साथ, हिरन की माँ अपने बच्चों के साथ गए नदी के किनारे पानी पीने ले जाते हैं, तो हिरन की माँ पहले जाके सर्वे कर लेती है नदी के किनारे, खतरे की घंटी होती है, some 30 seconds. After that, simply सर हिला तो बच्चे समझ जाते हैं कि बुलावा आ गया, लाइन क्लियर। The kids go there, the kids are young, actually middle age है तो बच्चे, हिरन की बच्चे। Believe me, within 15 seconds the game is finished. हिरन अपने पैर खोल के, हिरन की माँ अपने पैर खोल के नदी के किनारे नजर ऊपर रखते हुए पानी दे रही, बच्चों को भी इंडिकेशन देती पानी पियो। उस दौरान 15 सेकंड का, यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड चेक इट आउट, 15 सेकंड्स द गेम इज फिनिश्ड। 15 सेकंड्स के अंदर मगरमच्छ वहीं रहती, एक वाला दूसरे वाले का फिनिश, 7 to 12 seconds the game is finished। हिरन की माँ, बिलीव मी, उन्हें डॉक्यूमेंट्री नेशनल ज्योग्राफी रिस्पेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, they covered the eyes of the deer, हिरन की आंखों में आंसू तलाश करने की कोशिश करा कैमरा, and they found the tears। दर्द हुआ उसको कि मेरे साथ में मेरे बच्चे को मारा, दो निवाले के अंदर, एक निवाला अंदर हाफ एंड रेस्ट 50% लोग। लेकिन मैं जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो सिस्टम, उनकी जिंदगी का सिस्टम खुद वही है। एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स there is no accountability to it. Accountability in the sense, आपसे सवाल नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारा फैसला में कुछ गलत काम कर दो तो सवाल होता, क्यों सवाल होता भाई? मगरमच्छ से क्यों सवाल नहीं हुआ फिर तक? तुमने जो है हिरन के बच्चे को अपनी माँ के समय एटलीस्ट माँ का तो इधर करना चाहिए था, क्यों खाया उन्होंने? How can he broke out? सवाल सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ है। जब आपके साथ रिस्पेक्ट भी दी है शुक्र का, उसके साथ आपके साथ अकाउंटेबिलिटी भी आएगी।
If you do not identify that aspect, that's something different. अपने conscious में रहते, आधे पागल थे, चले गए, चलो recover. तो अपने conscious में थे, in spite of you knowing that you are the best of the creatures, you have not respected that position. अपनी अहमियत को नहीं समझा. फिर मेरा कोई वादा नहीं है. और वो वादा आज दुनिया में हम देख रहे हैं. अल्लाह का वादा किसके साथ है? अल्लाह का वादा इल्म के साथ है. अल्लाह का वादा किसके साथ है? अल्लाह का वादा कलम और किताब के साथ. नमाज से पहले आपके पास जो पैगाम वाला है, नमाज से पहले, नमाज तो कुरान से पढ़ेंगे 5-6 साल के बाद है, सबसे सबसे बात है कि सबसे पहला कमांड क्या है? If I do not have knowledge, I will not recognize my creator. Simple. Education का purpose खुद आपको क्या है? The first most important purpose of education is to identify your initiator, your creator. वहाँ अगर पहचान लेंगे तो मेरा सिस्टम से बहुत अच्छा होगा. वही नहीं पहचान, आप पहुँच नहीं सकते. Only we impact the world at scales. We build nations, we change societies, we create innovations. One human can change millions of lives. This is what is happening. एक इंसान millions की जिंदगी बदल सकता है. वो आपके पास power है. Only we can grow beyond limits. Everything else same pattern entire life. हर चीज को देख लो same pattern. जिंदा खाना पीना सोना पता पड़ जाता है. खाना पीना ही पूरी लाइफ. उसके अलावा दूसरों के साथ कोई चीज जुड़ी भी नहीं है. Only we have that aspect of growth. We human beings learn, change, improve, transform. Only we can create a legacy. Again, the term legacy is coming here. Others survive and go. We leave behind ideas, impact, contribution, and legacy. Only we leave behind. इसके अलावा बब्बर जी की कोई रिज्यूम नहीं है. देखो 5 साल पहले का एक शेर, अफ्रीका का शेर का रिज्यूम बताइए. 5 साल पहले अफ्रीका में जबरदस्त शेर था, ब्यूटीफुल लायन. कैन यू शो दैट रिज्यूम मोटिव? किसी का बन ही नहीं सकता. 95% पीपल का रिज्यूम नहीं बन सकता. वर्ल्ड पॉपुलेशन मुसलमान तो छोटे डिस्कशन and I'm a human being. Let's not be selfish when we talk about Muslims. We are accountable for considering non-Muslims. We are accountable. अपने पास सवाल होने वाला है कि आपकी तरफ से impact क्या हुआ. So let's move. Was that clear? Exaggerate तो नहीं कर रहा. हाँ? So career is the way a human being uses their ability to think, choose, grow and contribute. We can learn, unlearn and relearn. We have that ability. Do you understand what is unlearn? Learning the because of pado. What is unlearn? What is relearn? Why it is? This was said in 2018 when American author. I was astonished by amazed of your statement. Unlearn बोल रहा है क्या? तो आपके पास जो कचरा जमा हुआ था ना उसको सफाई की बात कर रहा हूँ. It's trying to clean up your mind. What junk is there? अंदर इसको छोड़ो, भूल जाओ उसको. आपको कोई चीज नुकसान पहुंचे निकाल के देखो अंदर simply remove it from your mind. तो चीज अरे ऐसा करा पिस्सा चला गया ऐसा करा. छोड़ो निकालो देखो. What is lost is lost. Move forward. If you do not move forward, you are finished. आपको अगर अच्छी जिंदगी चाहिए, आपको कैसी जिंदगी चाहिए इसको छोड़ो. इसका टेंशन लेना पड़ेगा. अगर आपको खरीदो सकते जिंदगी गुजर जाए, आपकी जिंदगी तो गुजर जाए, खाने पीने का टेंशन नहीं है. आप थोड़ा बहुत कमाने का खा लेते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन योर सैटिस्फैक्शन, योर डिग्निटी, आपको एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलता है. रोज शाम में आप देखते हो अरे कुछ खराब है. दैट इज सैटिस्फैक्शन इज योर सक्सेस पार्ट. That is your winning part. So we have total authority and freedom plus free will to take any kind of decisions for our career and life. Without education, we humans remain driven by basic instincts like functioning as social animals that thrive on connection and community. So all these are basically definition of self-discovery related to self-discovery. What I'm trying to take you forward is the third subject, third topic.
Now we move from career clarity, self discovery. आपको कैरियर की बेसिकली सोच दिया, then I told you who you are. Once you realize that you're a human being, then अपन पढ़ाई की तरफ. अगर आप ह्यूमन बीइंग रियलाइज नहीं करें, पढ़ाई की तरफ आना बेकार है. If you realize you're a human being, then you will be associating yourself with education books. अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो कहीं को टेंशन, कहीं को काम मतलब सुनाने के लिए था. So wrong decision at any stage can create confusion later, while a well-informed decision creates clarity, competence, interest, value-based journey, and moves towards career success story. So what I'm trying to say is subjects, streams, specializations. Subjects से शुरू होती है आपकी journey. It goes to streams, then it goes to your specialization, your higher studies, and then you connect yourself to the industry. वहाँ पे अपना एक career role अदा करते हो, right? You work as a welder, you work as an engineer, you work as a doctor, you work as a technician, whatever it is. Then वो career role से आपको organization impact करना, फर्क पड़ता. आपके नहीं रहने से, आपके एक महीने की छुट्टी पे आने से वहाँ पे फर्क पड़ता. That is again a driving force. Then ultimately you create wealth. तो बड़ा पैसा आता है. फिर आपको recognition होता है. अपने को क्या चाहिए मालूम? मैं भाई हैदराबाद में क्या चाहिए? इसके बाद से पैसा चाहिए. जैसी ग्रेजुएशन में एडमिशन करने के बाद हमारी बाप की ख्वाहिश शुरू होती है, पैसा कमाओ, राइट? फिर उसकी शादी की तैयारी, 15-20 लाख जमा करना है, शादी की तैयारी शुरू. That's where we are stuck. इसकी तकलीफ है. शादी का तो टेंशन ही छोड़ो, मुकद्दर में लिखा गया होना है, नहीं होना है, किससे होना है, कब होना है, कहाँ होना है, सब लिखा गया. कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप, कर रहे हो. आप 50,000 में कर सकते हैं, 2 लाख में कर सकते हैं, 15-20 में, 50 में कर सकते हैं. दैट्स एग्जीक्यूशन आपका पैटर्न. किसके साथ होना है, कब होना है, कहाँ, सब लिखा गया. डोंट टेक इट टेंशन. जो नहीं लिखा गया उसमें काम करो. जो नहीं लिखा गया आप सेल्फ इंस्पिरेशन, फ्री विल से आप क्या हासिल करें, वो नहीं लिखा हुआ है. फ्री विल से अपनी आजादी से क्या हासिल करें, जहालत हासिल करें या तालीम हासिल करें. तालीम से फिर अपना गुरूर हासिल करें या फिर इम्पैक्टफुल लाइफ हासिल करें. तालीम के गुरूर दे सकते हैं, पीएचडी गुरूर बना के देगा, इनके गुरूर दे सकते हैं. Anything that gives you power is again danger. So be careful. We try to humble you. So we'll take this journey. I'm just trying to take 10 minutes reflecting on Quran and education. Trying to reflect something on that. ये पढ़ाई अपने साथ एसोसिएट क्यों है? इज इट रियली क्या फिर बोलते ना वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी एजुकेशन है ना सर? वेस्ट से आप एजुकेशन यूरोप में कॉलेज ग्रेजुएशन डिग्री दे हैव टेकन टू द नेक्स्ट लेवल. वेस्ट का एहसान है थोड़ा बहुत. वेस्ट हैव टेकन दैट टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिग्निटी. हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी आप पैदा नहीं कर सकते, शायद अब पैदा हो ही नहीं सकती. हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी बना ही नहीं सकती. वो सिस्टम्स, वो सिंसियरिटी, वो कंटेंट डिलीवरी, वो कॉन्टेक्स्ट वो नहीं बना सकते. मुश्किल, नामुमकिन के करीब है. So according to the Quran, the purpose of education is much broader than acquiring information, earning a degree, or securing employment. It is much broader. देखो ठीक है, डिग्री समझ रहे, डिग्री हासिल करो तो मुसलमान जनरल. Education is a means of transforming the human being into a conscious, responsible, ethical, and productive servant of Allah. ये कुरान की मफ़हूम का definition. Believe me on that. Yes, context. एक निचोड़ का translation simple version में जा रहा. I repeat that statement. Education is a means of transforming the human being. Transforming. मिट्टी से सोना बनाना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है. उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. कुर्सी से दूसरी कुर्सी बनाना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं. रेप्लिकेट करना ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन इज फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज. उसको ट्रांसफॉर्म. जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैगाम निकला
तो वहां से 23 इयर्स का जर्नी देखो, ट्रांसफॉर्मेशन हुई। 23 साल के अंदर कायनात की हिस्ट्री में ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो सारी दुनिया में इम्पैक्ट पड़ा। उसको ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं था वो, दैट अपसाइड डाउन नहीं, कुछ और था कुछ और है एंड पॉजिटिव है। दैट्स द पॉइंट। So education is a means of transforming the human being from a normal social animal to into a conscious, responsible, ethical, and productive servant of Allah who fulfills his or her purpose in creation. The Quran does not represent education as a separate activity. Rather, learning is a part of humanity's mission on earth. Mission. Learning, ilm, knowledge, education is obligatory on us. Before namaz, it is obligatory on us. आप पढ़ेंगे तो फिर खुदा को पहचानेंगे, बोलने का मतलब नहीं पढ़ेंगे खाली नमाज में तो अल्लाह को क्या होने वाला है, we don't know, क्योंकि उसमें वो जस्तजू नहीं है ना। आपको मालूम है कि अल्लाह के सामने डाले तो उसका मजा कुछ और उसका इम्पैक्ट कुछ और है। A career development interpretation, अगर उस हिसाब से देखेंगे for a career clarity lab audience, the Quranic purpose of education can be expressed as education is not really for सिर्फ passing exams, obtaining degrees, getting job, earning money, ये सब this is not. This is again informal market में। अब post graduate में बता दो आपको स्विगी से बता, I saw that post graduate MBA post graduate student है स्विगी से बता, just 2-3 years back I stay here, मेरे पास रात में 11:30 बजे का आस्क क्वालिफिकेशन MBA हो, आपको पानी ला दे, मैं MBA से क्या करता हूँ, personality couldn't sell, he studied for a degree। तो उसकी बात नहीं करो। Normally what is happening is we are studying for degrees, that is not education। एजुकेशन आपके कॉन्शियस को हिलाना है, आपको सवाल पूछना सिखाना एजुकेशन, आपकी कंफर्ट लेवल से आप नफरत करना, सच पे रहना, जस्टिस पे रहना इज एजुकेशन, हक पे रहना इज एजुकेशन, सच बोलना, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग इज एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट ओनली डिग्री, दैट इज ऑल रबिश। एजुकेशन इज फॉर डिस्कवरिंग द ट्रुथ, understanding yourself, recognizing Allah subhanahu wa ta'ala, your creator, developing your character, building your competence, serving humanity, creating value, establishing justice, leaving a positive legacy. The Quran teaches that the purpose of education is not to make a living, but not to make a life. Am I making sense? Right or wrong? So, बॉदर मत करो। आप जब आपके पास नॉलेज रहेगी ना, you can 100% perform in exams। आपके पास नॉलेज नहीं रहेगी, लास्ट मोमेंट में रटना बनेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपके पास डिग्री भी आ भी जाएगी तो आप काबिल नहीं रहेंगे। That's the point. Don't run after marks, run after learning, not only knowledge, learning। जब आप learning aspect से नियत से बैठते हैं, अगर कुछ समझना है, learning is something what? इनको ये सब्जेक्ट की कोर समझना है। Why does physics? Why physics is important for life? What is gravity? If I throw the chair up, नीचे क्यों गिर गया? पूछो सवाल। वही फिर झाड़ का पत्ता नीचे क्यों? ऊपर क्यों नहीं उड़ जाता? हवा इतनी तेज है, तूफान भी आ रहा है तो झाड़ का पत्ता नीचे गिरता है। क्यों? वो क्यूरियोसिटी आपको लर्निंग एस्पेक्ट पे है, especially the youth who are in schools, colleges, and the parents who have the skills. उनको आहिस्ता dose देते हैं। Don't keep your kids in comfort. Disturb them with problems and problems and problems. Education should help a human being understand their creator, discover their purpose, develop their character, master beneficial knowledge, serve humanity, create value, fulfill their responsibility as a steward on earth. आप एक steward हो, आप एक पहले steward is your waiter in the hotel. You are a steward on this hotel. This earth, larger the broader view of Quran का मफ़हूम का, you are steward आप हैं, मुसाफिर हैं, just here to travel. So अपने travel journey में क्या करने का? Can you expect something from me? Expectation तो अल्लाह ग़फ़ूर रहीम अलग बात है, लेकिन आपको कुछ satisfaction नहीं मिलता। You will not be able to live a peaceful, good, healthy, valuable life. Value सिर्फ आप education चाहिए। First for example, मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूँ, और आपको बोलता हूँ पढ़ाई छोड़ दो बेटा, कुछ नहीं करोगे, आपको 40 साल का बजट है, 2 करोड़ रुपए, कुछ करने की जरूरत नहीं। गाड़ी दिलाता हूँ 10 लाख रुपए की, और एक बाइक दिलाता हूँ 2 करोड़ रुपए देता हूँ। Will you take that? As a youth, 17 years, 18 years, how's the offer?
2 करोड़ में 5 करोड़ दे दूंगा, assume something real होने वाला है, you take that thought is your personality. अगर आप उस materialistic view को attract हो रहे हैं, then you need to think, कब तक रहेंगे आप ऐसा? आपके पास चोरी भी हो सकता है कि मैं झूठा ऑफर कर रहा हूँ, दूसरे को करके चोरी कर रहा हूँ। अगर आपके पास नॉलेज रहेगी तो कोई चोरी नहीं कर सकता। You can survive with that knowledge anywhere in the world, without anybody also. आज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। You have a laptop, internet connection, you are the king of the world. आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, थोड़ी बहुत स्किल्स है, नॉलेज है, कमाई का प्रॉब्लम। मगर डिसिप्लिन नहीं आता एजुकेशन, तालीम से डिसिप्लिन नहीं आता, तालीम के बगैर सब। The degree may earn a profession, but true education should build a purposeful, ethical, and impactful human being. Fast forward, I'll just read the headings. The real purpose of education, according to Quran, is to know Allah, recognition of the Creator, to fulfill the purpose of creation. Allah जो चाहा आपसे वो fulfill करना है आपको, तो education की तरफ जाइए. To become a responsible steward. Steward का कुरान के हिसाब से खलीफा का मतलब है. खलीफा is your representative. Representative of justice. Representative of truthfulness. खलीफा यहाँ पर तो शर्माला पहले के गाड़ी चढ़ेगा वो देगा. खलीफा is a representative of justice, representative of truthfulness. सच बोलने वाला खलीफा होता है. Everybody is अंदर से आप कहीं ना कहीं सच्चे हैं. मगर उसको भाग गया. हो गया नहीं करोड़ चल रहा है. फिर आप मार्केट से इनफॉर्मल मार्केट में आते हैं. There is nothing called हो गया. जब तक आप हैं चलते रहना. Purpose of education to establish justice, as I told you, to serve humanity, to develop character, to seek excellence, ihsan or akhlaq. Lastly, to understand the world. Quran बोल रहा है. Quran बोल रहा है. The Quran repeatedly calls people to study nature, astronomy, geography, history, trade, agriculture, human behavior, psychology mention करना Quran. अपन खाली इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, पूरा मेला लगा है. You know, psychology is the topmost subject. Psychology and physiology are the topmost subjects. किसी आप उस बंदे से बीटी नहीं कर सकते, बात ही नहीं कर सकते. उतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मगर आप जानते नहीं उसके बारे में. अनफॉर्चुनेटली नोबडी टेल्स अस. पूरा एजुकेशन मेरा में जो एजुकेशन मेरा जरूरत था, खाली फ्लैट जो एजुकेशन इंजीनियर डॉक्टर वो हमें बीएससी की कॉपी लगा छोड़ रहा है. क्योंकि एक ट्रेंड बना हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है. तो बुखार उतारना ये कैरियर वर्कशॉप्स का मकसद है. You have to take out that comfort level, start thinking about it, reality of life. What is Google? How Google developed? Can anybody answer? How Google developed? The core of research. What is algorithm? सोच. आप क्या ढूंढ रहे हैं दुनिया में, मैं आपको बताता हूँ. That is Google. आप जो सोच रहे हैं मैं आपको बताता हूँ. That is Google. What is that? That is your neural network. That is your thought process. What is Tesla doing? Tesla is making 100 satellites in the sky. दुनिया के बाहर 100 satellites आने वाले हैं. Elon Musk क्या करने वाला है? आपके पूरे information को gather करो. What is that? Psychology. What do you think? कैसा? By the way, Elon Musk will be the first individual trillionaire in the history of human being. इकोनॉमिक हिस्ट्री में फर्स्ट ट्रिलियनियर अगर बढ़ेगा तो $1 ट्रिलियन का मालिक है. जैसी आईपीओ निकली का टेस्ला, द फर्स्ट ट्रिलियनियर इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक वर्ल्ड. कैन यू इमेजिन व्हाट इज इट? सिंगल ओनर, इंटेलिजेंस. अपन बता रहे हैं अलग ही खूबसूरत है. Okay, this I think will be the most game-changing slide for you. So we all travel in time and space. फिजा में और वक्त में ट्रैवल करें. Two areas, right? उसके साथ टाइम के साथ अपनी एज भी बढ़ती है.
your climb. Today, exercise today. And then उम्र बढ़ती, मगर physics अपनी जो है, so this is the pattern of every living creation. ऐसा नहीं कि छुट्टी के साथ छुट्टी भी बुरी होती है। Every living creature has a start, has an end. End अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जर्नी अपने कंट्रोल में हो सकती है। If we have proper attitude, if we live, suppose there is a saying, what if there is no God? एक author बोला, what if there is no God? No. Suppose there is a God, then there was a debate online. Suppose there is a God, तब तो फंस गया ना। If there is no God, no problem. Suppose there is a creator, then I'm in a mess that day. So why do I create a mess? I will assume there is a God. Non-believer. लेकिन ये क्रिटिकल थिंकिंग है। एक जब नॉन-बिलीवर इस्लाम कबूल करता है, उसकी थॉट प्रोसेस को फॉलो करता है। Very astonishing. There is a lady, United States की lady है, Lily J. She was a singer. She is revolutionizing social work. Lily J. आप नाम जाके देखिए उसको. You just follow the Twitter account, Facebook account, Instagram account. Astonishing personality. उसकी thinking, उसकी thought process 100 times में अगर आप सोचे तो वो मुखातिब नहीं. Recent 2-3 years, 5 years, she will tell you every meaning of every word of the Quran. With practical implementation of that word. That's the beauty of it. Now, in academic progress, what I'm trying to show you here is academic ecosystem में बता रहा हूँ. What I'm trying to show you is academic ecosystem pathway. This part is completely related to your education. So we start. बच्चे को अपन भेज देते हैं, अपन भी गए. We start with elementary schooling. 4-5 साल के अंदर elementary schooling. एक easy one. किताबें खरीदो, कलम खरीदो, bag, all those stationery, right? Everybody faces that. It's being faced for past 1300 years. इससे पहले नहीं होता था. This also you know. I will ask this question. 1300 साल पहले ये सब नहीं था. 1300 साल, 1350 साल पहले ये सब शुरू हुआ. So, schooling के बाद we reach to a point where we go to high school. High school is 8, 9, 10, right? तो जो lower middle class है वो लोग बेचारे यहीं खत्म हो, they're finished here. They're finished here. उसके बाद वो चमक देख ही नहीं सकते. They are never able to see that. क्योंकि उनके पास पहली चीज वो शूर नहीं है. शऊर आता है कहने में से इंतजाम. उसके पास वो वैल्यू ऑफ एजुकेशन नहीं है. वैल्यू ऑफ तालीम हासिल करके ताकि आप बता सकता हूँ कि गुर्बत से निकल सकता हूँ तालीम हासिल करके, या फिर वही जाके वो बेचारे ग्राम शॉप दुकान की शॉप पान खा लेते हुए जर्दा खा लेते हुए जाते. That's what is happening, right? So most of the population is finishing at that stage. Why I am trying to show you here is most of the population is finishing here in terms of coming out of this academic ecosystem. ये system निकाल के देख कर आपको ये urban system से नफरत करके दूर हो जाता है. This is what is happening. So be careful. Second point, second layer after this is junior college. Game changing point. Turning point of your life was 18, 19 शहीद थे बेवकूफ. Turning तो समझ में आता था. Took me after his going, it took me 30 years to understand what is turning point. It is really a turning point of life. This is the point that will show you will proceed in the formal market or in the informal market. जहन आपका जो है आप बता सकते हैं. आप मेरे को बच्चे दे दीजिए, 50 बच्चे दे दीजिए, अलहमदुलिल्लाह मैं आपको एनालिसिस करके बता सकता हूँ मेन स्ट्रीम में है या डाउन स्ट्रीम में. बिकॉज माइंडसेट आप उसको रीड करना पड़ेगा. You need to read his mindset, his or her mindset कैसा है. How much does they value education? That's the only mindset. अगर मैं वहाँ से किताब से मोहब्बत करता है या वहाँ डिग्री से करता हूँ, किताब तालीम इल्म है उसके पास, is he working really in understanding the book? Then yes. मैं सर्कल इसलिए करा कि
दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट आपको जो ध्यान देना एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, एज मेंटर्स, एज सोसाइटी, एवरीबॉडी शुड फोकस हियर। अगर आपको कोई नौजवान दिख रहा तो पहला या दूसरा सवाल पूछो, पूछो आप अपने काम करने वाले बच्चे से पूछो या हर किसी से सवाल कर दो, फर्जी किफायत से कोई सवाल कर, आप ये नीयत चाहिए तो आपको सवाल भी मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सवाल करते हैं तो उसको सवाल चुनता होना नहीं, अगर उसका रिफ्लेक्शन पॉजिटिव रहा तो उन्हें लाइक डाल साइकोलॉजी से खेलो, तंजिया मत बोलो, क्या करना पढ़ाई 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 24 घंटे ये बात करते रहो, क्योंकि आज हम सवाल पे हैं डाउनफॉल। गड़े में तो क्या चाहिए अपने को? रस्सी चाहिए, रस्सी क्या खाली डिग्री की है। आप चलिए मेरे साथ सर्वे के लिए तैवा में रात में 11 बजे का ठहरा, पूरे डिग्री वाले मिल जाए, पूरे मिलता है वो डिग्री, मैं आपको वादा कर पूरे मिलते डिग्री तकरीबन 70% डिग्री वाले मान खाने की देसी नहीं, मान नहीं करना, मान खाने की देसी क्या हासिल हो तालीम। सो प्लीज दिस इज योर पर क्या समझते 25 साल 21 साल के बाद हम बच्चों को छोड़े पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करते, दैट इज वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपकी पर्सनालिटी बनती या बिगड़ती 18-17 साल के अंदर। आपकी फितरत, पर्सनालिटी इज योर फितरत, योर मिजाज, योर अखलाक, योर तहसीन, योर अदब बनती या बिगड़ती 17-18 साल 19 साल के अंदर। अगर यहाँ पे बच्चा सही पटरी पे है तो 60% 70%, अगर यहाँ 50% से बिलो है अखलाक तहसीन में, उसको नहीं मानोगे बड़े आए तो कैसा करेंगे, वो एक बात बड़ा करके खाने की आदत नहीं मानो, बात तो नहीं मानो, स्कूल क्यों जाना नहीं मानो, एजुकेशन हासिल करना, कॉलेज क्यों जाना नहीं मानो, आपको नहीं मालूम कॉलेज जा रहा नहीं जा रहा, जेब में कितने पैसे आपको मालूम होना चाहिए थे, उसकी दौड़ आपको मालूम होना चाहिए, उसकी उड़ान आपको मालूम होना चाहिए, यू शुड नो दैट। इफ यू आर नॉट, फिर आपको कंफर्ट लेवल में या तो एक्सेप्ट यू डोंट केयर अबाउट इट। शेयर का बच्चा पैदा होता है, दो जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी का सवाल ही नहीं है ना, उसकी पढ़ाई की तारीफ की जिम्मेदारी लिया, शेयर में वो है उसकी तरबियत में मार खा बना सिखा दिया अपन को ही करना नहीं, चार छक्का मार करना आराम कर दो इसके बाद। So we are social animals. That's why हम सवाल में हैं. Not only us, the entire human breed is going in सवाल. Why? Because मैं बहुत जिम्मेदारी का स्टेटमेंट कर रहा हूँ. Right people are doing the wrong job for the wrong purpose. Right people are doing the wrong job for a wrong purpose. That's why सारा सिस्टम उलट-पुलट. और ये जमाना आ रहा है तो सिस्टम उलट-पुलट पे सीधा होने वाला है. उसमें पार्टिसिपेशन अगर आप करिए तो जीत जाते, नहीं तो फिर आपका कोई जिम्मेदार नहीं। ये सब हिंदू काफी ये सब छोड़ो, यू आर वी आर सॉरी टू से वी आर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीइंग गॉड ह्यूमन बीइंग। सिस्टम उतार चढ़ाव लाइफ के हर स्टेज में आता है, लेकिन हिस्ट्री में हर वक्त आता है। आप किस तरफ है वो आपकी फिल्म के ऊपर है। आपको सिर्फ पैसा ऐसा नहीं मिलता था, बैंक में पैसा मिलता था, एटीएम में जाओ 4 की कैश में पैसा मिलता था, 3-4 साल का शुरू बताओ ना। सो मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, हाउ डू यू अर्न इट, हाउ डू यू सर्वाइव, हाउ डू यू लिव, कितनी आप सेल्फ रेस्पेक्ट है आपके पास, दैट्स ऑल अबाउट इट। नाउ वंस यू हैव डिफाइंड, क्योंकि ये पलट के आने वाली चीज नहीं है, वन यू हैव डिफाइंड योरसेल्फ और योर चाइल्ड, द नेक्स्ट स्टेज इज योर the most challenging stage. यहाँ पे already 40% of Muslim population is out of the context of high school. 40% of Muslim population school dropouts है. मैं आपको weird data ला के बता सकता हूँ. But because of education नहीं माना. और ये road map नहीं माना. कोई बता रहा नहीं माना. ये पढ़ो चला, वो पढ़ो चला, वो पढ़ो. उसके बाद पढ़े के बाद 22 साल का पूछ रहा हूँ घर वालों से क्या करो, शादी करो. उसका क्या करो, नौकरी करो.
क्या करो बच्चे पढ़ जाओ, अरे वो पैदा नहीं हुआ घर में, उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। दैट्स व्हाई यू सी ऑल दिस न्यूसेंस, क्राइम हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, डाइवोर्सेस हो रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, क्योंकि आपको पर्पस ऑफ लाइफ से जुड़े हुए नहीं है, पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ एजुकेशन से जुड़े हुए नहीं है। दैट्स व्हाई ऑल दिस न्यूसेंस हैपन। अगेन यहाँ पे यू हैव द सर्कल हियर, more than again 40-50% people are dropping out after second year of graduation. चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे 3 year डिग्री प्रोग्राम हो, चाहे फार्मा हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे बीएससी हो, they are dropping out of graduation because they are not finding that purpose. कहीं तो जॉब तो मिल जाना मेरे को, कॉल सेंटर में 35,000 रुपीज दे रहे हैं, 35,000 रुपीज सैलरी दे रहे हैं, क्या चाहिए उसको, कहीं तो पढ़ोगे ना, जॉब का प्रॉब्लम नहीं है, आपको जॉब आप जॉब मैं देता हूँ, I will help you in finding a job. That's not a problem. The problem is your self-respect, your identity. Why are you born? क्यों आप जिंदा है, वो मालूम होना है। आप जिंदा है तो मालूम हो गया तो फिर आप इससे दोस्ती करें तो इससे छोड़ देंगे। This is your friend. This is your friend. Before the book, this is your friend. अब हम क्या कर रहे हैं? What mistake we are doing is we are not focusing on these two aspects. ग्रेजुएशन करने के बाद अपन क्या हम समझ रहे हैं, जॉब मिल जाता है, लेकिन we are not focusing on internship, giving them industry exposure. We are not building this profile. How many of you have LinkedIn profile here as youngsters? LinkedIn profile किसके पास? Youngsters. You should have a LinkedIn profile. आपके पास है LinkedIn profile? You know what is LinkedIn? आपके पास है LinkedIn profile? You don't know. LinkedIn is an ocean. समंदर है बड़े लिखे लोगों, एक से बड़ी अक्षर से LINKEDIN.com, LinkedIn.com. Go and create your portfolio. आपकी एक पहचान बनती है, आपके 10, 20, 15, 25, 30 फॉलोअर्स होते हैं, आप खुद एक महसूस करो, कम टू द मेन स्ट्रीम मार्केट, आप दूसरों को देख के सीखते वहां से, दूसरों की डिग्री, दूसरों का एजुकेशन, दूसरों के डिलीवरेबल, दूसरों के इम्पैक्ट, दूसरों का इनोवेशन, दूसरों के इकोसिस्टम्स को देख के सीखते हैं। We are not there, we are not building social profiles, मतलब कोई पोर्टफोलियो नहीं है। ग्रेजुएशन फाइनल में ग्रेजुएशन भी हो गया, क्या करा, नहीं करा, पढ़ गया, जॉब चाहिए, जॉब नहीं है, कॉल सेंटर में आराम से, and that is where the masses are going. The masses are going to odd jobs, not the mainstream jobs. Innovative jobs में जा रहा है, consumer centric jobs में जा रहा है, जब business start, पैटर्न है, पैटर्न के अंदर सिस्टम में, तो आप क्रिटिकल थिंकिंग 3-4 साल 5 साल के बाद आप डमी हो गए, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते थे। एक बार आप वो पैटर्न में फंस गए, उसके अलावा आप यू ट्राई टू सिक्योर योर पोजीशन, आपको वो नौकरी छोड़ो तो खत्म, आपकी बहुत असर हो गया। दिस इज व्हाट कॉर्पोरेट थ्रेट है, कॉर्पोरेट लाइफ की थ्रेट है। हर 5 साल बाद कुर्सी चेंज हो, every 5 years change your position, change your organization, change your system, challenge your life, challenge your time, accept problems. Money is not a problem, बिल्कुल ना सर, मनी का प्रॉब्लम नहीं, चाय के ठेले लगा लो, आपको मनी मिल जाए, बात बता, मनी नॉट प्रॉब्लम। So if you are a parent or a youth, try to focus on getting into second year में आगे मार्केट में चले जाओ, फ्री में काम करो, बोलो मैं पैसे देता हूँ काम करने, यहाँ तक भी ना बता, अगर काम सीखो, काम जिसके पास वाकई में हो रहा, go and work with them to learn how systems work. ये बच्चों को भेजा ये, go and learn something. आपको पता चलता why it will be useful, because जब आप रेडी हो जाएंगे, यू उठा दी मार्केट, उन्हें बुलाता, वो ऑर्गेनाइजेशन वाला बोला, अरे बात ये बंदे को तो काम जानता हूँ सर, मैं आपको 35 सर की काम प्लीज यार 33 में राजी हो क्यों करो। इफ यू डू नॉट हैव दिस, बस इंडस्ट्री को चाहिए, आप किसी बंदे को लेकर ट्रेन करना पसंद करेंगे या ट्रेड बंदा आपको चाहिए? ट्रेड बनना चाहिए, रेडी बनना चाहिए। तो आप रेडीनेस अपने आप को सेकंड ईयर में करो, सेकंड ईयर के बाद करो, व्हाई यू नॉट डूइंग इट, व्हाट इज स्टॉपिंग यू, व्हाट इज स्टॉपिंग यू इज कंफर्ट, आराम करके आप मेरा ढका देना दरवाजा